हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आज जो है ना सो टुडे आज इंग्लिश अच्छा आज जो मैंने है अपने बाल ब्लो ड्रायर से स्ट्रेट किए हैं। और ब्लो ड्रायर से स्ट्रेट करने का मकसद ये होता है कि मुझे बिल्कुल स्लीक स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए होते और मतलब एक वॉल्यूम के साथ स्ट्रेट इफेक्ट भी हो और थोड़े बाउंसी भी लगे। दैट्स व्हाई आई हैव स्ट्रेटन देम विद द ब्लो ड्रायर एंड इफ यू गाइस वांट टू सी हाउ आई डू इट देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं सब आपको साथ साथ गाइड करती रहूंगी एंड लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना डू इज मेरे बाल गीले हैं तो गीले बालों में आई हैव टू डू मल्टीपल स्टफ। 3 प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, मूस स्प्रे और आर्गन ऑयल। I think it's argan oil. I don't know. It's arga beta oil. I'll show you. मैं क्या करूँगी, मैं पहले अपना ये डिक्सन का आर्गा बीटा ऑयल लूँगी और इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स, वरना आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो सकते हैं। इसके साथ पंप भी आता है बट मैंने पंप लगाया नहीं है। What I'm gonna do next is a few drops like this. Warm it up in my hand. बिल्कुल पाम पे मैंने और इसको ऐसे अपने गीले बालों में मैंने लगा देना है। इससे ये होगा कि मुझे ब्लो ड्रायर से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी बाल स्ट्रेट करने में। मतलब ऑलरेडी बाल मेरे इतने सिल्की हो चुके होंगे कि वो खुद ब खुद जो है स्ट्रेट होते जाएंगे। ये ऑयल बहुत बेस्ट है। आई मेक अ हेयर वीडियो जिसमें मैं बता सकती हूँ कि आपको कि आप इस ऑयल को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस ऑयल डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो। ओके सो ऑयल हमने लगा लिया। I'm taking my big volume styling moves क्योंकि I want a lot of volume. What I'll do is I'll put this in my roots. ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये आर्गाविटा ऑयल तो आपको पाकिस्तान में आराम से कहीं भी मिल जाएगा। अब जो मेरा ये बाकी मूव है ना, what I'll do is इसको मैं क्या करूँगी कि अपने गीले बालों में ये ऊपर सिर्फ मैं वहाँ पे लगाऊंगी। That's it. अच्छा जो आर्गाविटा ऑयल है वो आपको पाकिस्तान में कहीं भी आराम से मिल जाएगा जैसे स्टोर से। इफ यू इन इस्लामाबाद देन यू कैन गो फॉर कॉस्मेटिक के तो वहां से आपको आराम से मिल जाएगा। आई टेक दिस स्मार्ट हिल वॉल्यूम स्प्रे। इससे क्या होगा कि ये मैं रूट्स में स्प्रे करूंगी तो मुझे मेरी रूट्स में एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलेगा। सो टुडे आई एम जस्ट अबाउट वॉल्यूम एंड स्ट्रेट हेयर। ब्लो ड्राई से करने का मकसद यही है क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए। आई डोंट वांट दिस स्लीक हेयर इटसेल्फ। और जो अगर मैं पोनी भी बांधूंगी उसमें तो मेरी जो पोनी है वो बड़ी वॉल्यूम आई सी लगेगी। That's all. And I'm sick of straightening hair all the time with the straightener. I just wanted to go for a change. I'm done with all the sprays and just letting that sink in. अपने हाथों से मैं उसको स्काल्प में और अपने बालों में अच्छे से absorb कर रही हूँ। पहले तो मैं अपने बालों को सेक्शन करूंगी, पीछे वाले बाल थोड़े से सेपरेट करूंगी और इस तरह। Now I'll push you guys a little back. तो जो ब्लो ड्रायर मैं यूज कर रही हूँ it's from Bremod और ये प्रोफेशनल ब्लो ड्रायर है। You can use any blow dryer जो आप लोगों को बेहतर लगता है। अपने बालों के 2 पार्ट करूंगी। Take my paddle brush, कॉम्ब करके अच्छे से और now on this side. Do that again. I'm happy. इतना स्ट्रेट काफी है। इसकी जो शेप है वो मैं इसको बाद में दूंगी। I'll do the next one. नोजल लगाने से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि हीट डायरेक्ट हो जाएगी।
पीछे से पकड़ के मैंने इस तरह अपने ब्रश को रखना है। That's it. अब मैंने एंड्स पे क्या करना है कि मैंने अपने ब्रश को लेना है यूं, इसको मैंने टिल्ट करना है थोड़ा सा यूं, राइट। थोड़े से बालों को मैं इस तरह कर दूंगी ताकि उसमें फंसे रहें। अब जब तक गर्म है इसको मैं फिर से एक बार अपने हाथ से एंड्स को कर दूंगी। अब मेरे जो एंड्स पहले फटे हुए लग रहे थे ना, अब फटे हुए लग रहे हैं डिफाइंड है। आई जस्ट पुट देम हियर, आई डू रेस्ट ऑफ माय हेयर एंड फास्ट फॉरवर्ड इट। It's not a game, it's a rich thing. Okay guys, so this is how my hair looks like. बिल्कुल perfectly obviously straight नहीं किया है मैंने, और इतने डेड स्ट्रेटनर वाले इफेक्ट की तरह हो भी नहीं सकते because it's a blow dryer। तो ये बहुत bouncy, बहुत lively लग रहे हैं। They smell so good because of the products that I've used on them, and I'll add a clip of how they look from below। Obviously सारे बाल कैमरा में पूरे नहीं आ रहे हैं, but I'll show you। ये इस तरह से दिख रहे हैं, इस तरह से इस तरह से दिख रहे हैं, and I really like the way they're looking। I'll show you from the behind as well। So guys, if you like it then please subscribe to my channel, like this video, और मुझे बताइए कि आपको मज़ीद और कैसी वीडियोस चाहिए so that I can create it for you guys, and I shall see you in the next one। Bye bye।